ये कुछ स्लाइडें हैं जो गाइटन का नाम सुना है ना, वही किताब पढ़ते हो कुछ और पढ़ते हो? एक जैन गलत है, हम उसको प्रेस्क्राइब नहीं करते। सब डायग्राम्स आर देयर फॉर द नॉर्मल ईसीजी को एक बार देख लीजिएगा। ये आपकी लीड्स हैं जो मैंने बताई थी एक्सिस के लिए, लीड एक्सिस, ओके, ऑल 6 आर देयर, बाइपोलर एंड ऑगमेंटेड। दिस, ये हमने डायग्राम पहले नहीं देखा। दिस इज व्हाट? वेक्ट्रोकार्डियोग्राम, actual recording of the cardiac vectors. There are points you can remember. First one, small vector, initial, कहाँ का हुआ ये? Mind it, this is the vector of the ventricular depolarization, not atria. Vector number 1, initial small vector of the middle, what are the intraventricular septum जो depolarize होता है, तो उसका component है ये. Then apical portion, lateral portion, last portion base of the heart, and then come to the 0.50. Whole heart is getting depolarized. This is vectrocardiogram, not electrocardiogram. ये जो मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस कैसे देखते हैं वो हमने कल देखी थी, गोला बना करके, बिना गोला बनाए बन गई इसके अंदर। लीड 1, लीड 3, ओके। ये इसका डिफ्लेक्शन लीड 1 में इतना है, यहाँ पे तक आ गए, लीड 3 में इतना है, दोनों को परपेंडिकुलर डाला, क्रॉस किया, ये आपका मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस आ गई इसकी +59 डिग्री। दैट इज द वे टू कैलकुलेट द मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ द वेंट्रिकुलर, ये आ गया। सो विल टॉक अबाउट द disorders of the rhythm of the heart. Conduction blocks are there, myocardial hypertrophy can be there, and myocardial infarction can be there. Most of these disease of the heart falls into these categories. Arrhythmia means disturbance in the rhythm of the heart. Now, the most common cause of the rhythm disorder arises from the abnormality of the sinoatrial node. So abnormal sinus rhythm can be in the form of the tachycardia, simply increase in the heart rate is there. That is called as the sinus tachycardia. If the heart rate is more than 100 beats per minute, it is sinus tachycardia. This is the example of the sinus tachycardia. The ECG recording in case of the sinus tachycardia, heart rate is more than 100 beats per minute. Bradycardia, decrease in the heart rate. Most important is because of increased vagal tone or increased vagal stimulation or parasympathetic stimulation can cause bradycardia. And this is the typical recording of the bradycardia. You can see the R waves are spaced enough for a longer duration. So that is bradycardia. This is the phenomena of, बाद में भी आएगा, sinoatrial block. Impulse is arising, is forming in the sinoatrial node, but it is not able to come out of it. It is not depolarizing the atria. It is not depolarizing the ventricles also. So there is a complete drop of 1 beat in between. No beat is there. This type of the phenomena is known as the sinoatrial heart block. दोनों के बीच में कहीं ब्लॉक है, ऐसे नोड से इंपल्स बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। Then there can be atrioventricular block, इसकी बाद में बात करेंगे। Yes, that is our interest. हम पहले एट्रियल एबनॉर्मेलिटीज की बात करें रिदम में, तो साइनस टैकीकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया एंड साइनस एरिथमिया, वो तीसरी चीज अभी नहीं आई है। साइनस एरिथमिया वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। डिस्टर्बेंस इन द रिदम ऑफ द हार्ट बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी साइकिल। व्हेन वी टेक इंस्पिरेशन, हार्ट रेट इंक्रीजेस, व्हेन वी डू एक्सपिरेशन, हार्ट रेट डिक्रीजेस। दिस change in the normal rhythm of the heart because of the respiration is known as sinus arrhythmia, and it is absolutely normal phenomena. This sinus arrhythmia occurs because of beat to beat fluctuation
in the output of the parasympathetic system over the vagus nerve to the heart. They are not dependent upon the sympathetic outflow. They are mainly because of the changes in the vagal tone continuously from beat to beat over the heart, resulting into changes in the heart rate. Okay. Such beat to beat changes can be better recorded not by the ECG but by a machine which record the हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV कहते हैं, वो आजकल काम करते हैं, उसमें काम लेते हैं उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी. तो वेगल टोन इज रेस्पॉन्सिबल और चेंजेस इन द वेगल टोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना ऑफ द साइनस एरिथमिया. ओके. देन द थर्ड थिंग और फोर्थ थिंग इज द atrial flutter. Atrial flutter means the atria are contracting very fast. The atrial rate of contraction may range from 200 to 250 beats per minute. 200 से 250 बीट प्रति मिनट तक जा सकती है एट्रिया की रेट. सो इट विल बी नोन एज द एट्रियल फ्लटर. जैसे फड़फड़ाते हैं ना एट्रिया, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस मच बट एट्रिया आर फ्लटरिंग. So there are multiple P waves in the atrial flutter and then it is followed by a normal QRS complex. So this type of the wave which will be seen 350 तक दी है. This is atrial flutter. जो मेजर आपको वेव दिख रही है वो QRS कॉम्प्लेक्सेज हैं. P wave प्रैक्टिकली दिख ही नहीं रही है. ये P wave आ रही है, बहुत छोटी छोटी आ रही हैं. They are known as flutter waves, they are known as. Now in this case there are many patients in whom rather there is a QRS complex after 2 P waves. It will be known as 2:1 block. 3 P wave आने के बाद में एक QRS आ रहा है 3:1 block. 4 P wave के बाद में एक QRS आ रहा है 4:1 block. So such type of the blocks are there, but in case of the atrial flutter the blocks are usually fixed. It can be a 2:1 or 3:1 or 4:1, whatever it is. So multiple P waves or P wave like deflections are there, followed by a normal QRS complex. And the atrial contraction rate can vary from 200 to 300 beats per minute. So atrial beating rate will be different than the ventricular beating rate. That is atrial flutter. Then come the atrial fibrillation. There are no P waves at all. इसमें P waves आती ही नहीं है, बहुत छोटी छोटी दिखती है इस तरह की फ्लटर वेव, फिब्रिलेटरी वेव्स कहलाती हैं. They are not F waves. छोटा F लिखते हैं. F waves are there, fibrillatory waves are there. Now why the flutter waves are there? Why the fibrillatory waves are there? We have to know the basic pathology behind them. The multiple P waves at certain given time, if the impulse arises, say if the atria are normal size, this one, impulse arises from there, spreads over the atria, comes to the same point where it has started. It finds that that part of the atria from where it started earlier is still refractory. It cannot be excited. So the impulse dies down. Impulse यहाँ से शुरू हुआ, घूम के एट्रिया में वापस वहां भी आएगा ही आएगा वो, मगर जब तक ये पहुंचता है नॉर्मली तब तक ये हिस्सा अभी भी रिफ्रैक्टरी है, तो ये वापस एंटर होकर के एक्साइट नहीं कर सकता इसको. So it dies down there. But if the atria gets dilated, मान लो माइट्रल वाल्व में कोई प्रॉब्लम है, ट्राइकस्पिड वाल्व में कोई प्रॉब्लम है, एट्रिया को ज्यादा काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो डायलेट होते चला जाएगा. तो डायलेट जब एट्रिया होगा तो उसका पाथ बढ़ जाएगा, यहां से यहां तक का पाथ बढ़ गया. सो व्हाट कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन द पाथ? द इंपल्स अराइजिंग फ्रॉम दिस पोर्शन when it goes round and reaches to the same place, this part of the atria has come out of the refractoriness. So this impulse can re-enter, and this re-entry phenomena causes the circus movement. So now the atria are not waiting for the normal impulse to arise from the sinoatrial node. It is the single impulse which is now rotating again and again. A circus movement has developed. So one most important cause of the atrial flutter is the dilatation or enlargement of the atria, or directly we can say
बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द पाथ लेंथ, पाथ बढ़ गया। तो एक ये सबसे बड़ा कारण होता है एट्रियल फ्लटर का। द सेकेंड कॉज कैन बी दैट पाथ में बी इंक्रीज, ओके, बट इफ द कंडक्शन वेलोसिटी इज स्लो डाउन बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया और सम अदर रीजन। यहां से कंडक्शन वेलोसिटी जो एट्रियल मसल की थी वो मान लो कम हो जाए, धीमी पड़ जाए किसी वजह से, so impulse will take more time to reach to the original place and it find that part has come out of the refractoriness. Again the circus movement will start. So increase in the path length or decrease in the conduction velocity will cause the phenomena or can cause the phenomena of the atrial flutter. As the atria enlarges, definitely the blood supply of the atria is not much good. So blood supply will gradually suffer because of the enlargement of the atria. Many parts of the atria will become ischemic, and because of ischemia what happens? The muscle gets irritable. Ischemia causes irritation, वहाँ ionic permeability बढ़ती है. So multiple areas of the atrium starts generating its own rhythm. एक ऐसे नोड से आ रहा था, वैसे नोड से नहीं आ रहा, उसके अलावा 100, 150, 250 एट्रिया के ऊपर इंपल्स जनरेटिंग पॉइंट डेवलप हो जाते हैं. दे आर नोन एज एक्टोपिक फोकाई. एक्टोपिक फोकाई डेवलप इन द एट्रिया एंड मल्टीपल एक्टोपिक फोकाई आर देयर. नाउ आउट ऑफ दीज मल्टीपल एक्टिव फोकाई they are causing focal depolarization of the atrial muscles. So there is no effective contraction of the atria. इफेक्टिव कंट्रैक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि मल्टीपल एरियाज हैं और छोटे छोटे हिस्सों में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. सो इफेक्टिव कंट्रैक्शन इज नॉट देयर ऑफ द एट्रिया एंड आउट ऑफ दीज मल्टीपल फोकाई जनरेटिंग द इंपल्स नोबडी नोज which of them will enter into the AV node and will cause the excitation of the ventricles. So there is no correlation between the atrial contraction and the ventricular contraction. No correlation and no time frame is there. अभी एक इंपल्स आया था, हो सकता है इमीडिएटली दूसरा आ जाए या काफी देर बाद नहीं आवे दूसरा. सो देयर इज अ कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ द एट्रियल एक्टिविटी एंड द वेंट्रिकुलर एक्टिविटी. No effective P waves are there. F waves or fibrillatory waves are recorded instead of the P wave, and we can say QRS complex is not occurring continuously. It is not easily preceded by any P wave. Any of the impulse can enter into the node and can excite the ventricle. That is the phenomena of atrial fibrillation. Are these conditions dangerous? No, they are not dangerous, because ventricular function is not getting affected. And if you remember the cardiac cycle, 75% of the ventricular filling during diastole occurs without the atrial contraction. It is the last portion, second rapid filling phase of the ventricles, which is due to the atrial contraction causing the 25% of the filling. तो जब तक आदमी रेस्ट कर रहा है, ज्यादा भागा दौड़ी नहीं कर रहा, तो 25% ब्लड ना आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. सो इट इज नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, बट इट कैन रिजल्ट इन टू अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो. वो आगे की बात है. सो दैट इज एट्रियल फ्लटर एंड द एट्रियल फिब्रिलेशन. नाउ वी कम टू, अब हम आगे आते हैं वापस. सिमिलरली वेंट्रिकुलर फ्लटर और ventricular tachycardia and ventricular fibrillation can be there. Ventricular tachycardia and ventricular fibrillation are serious conditions. They are life-threatening conditions. If not immediately given attention to, the patient may expire. So, ventricular fibrillation can be of many types. It can be a supraventricular fibrillation, as you can say, arising from the AV node and upward, or arising from the ventricle itself. So ventricular flutter is increase in the ventricular rate. Okay. Ventricular fibrillation is just fibrillating, ineffective contraction, ineffective output, ineffective cardiac output, patient may die. So beside the two causes of circus movement we have seen in the atria, which were responsible for the atrial flutter, are also responsible or can be present in the ventricular flutter also. But in the ventricle, a third condition is also added.
इन दी वेंट्रिकल्स, अरे क्या बातें हो रही है ये? इन दी वेंट्रिकल्स the bundle of fish is there, two bundle branches are there, right bundle branch, left bundle branch. Normally the impulse proceeds via the both branches, excites the myocardium of right and left ventricle and ultimately dies down. दोनों एक जगह आके मिलते हैं और वहां खत्म हो जाते हैं क्योंकि आगे नहीं बढ़ सकते हो. The muscles are still refractory. Okay. Now, if these two bundle branches are there, if one branch is blocked, okay, so normal branch will conduct the impulse in one particular direction, other branch will not conduct the impulse at all. So in that case, the impulse to the blocked side will proceed from the right bundle branch, we can say, and then from muscle to the left hand side. But under certain circumstances, this branch, we can say left bundle branch, which was blocked, this block is unidirectional. What does it mean? The right bundle branch is conducting the impulse normally, left bundle branch is blocked, but in one direction only. It blocks the conduction of impulse from upward to the downward direction, but it can conduct in the retrograde direction. नीचे से impulse enter हो सकता है इस branch के अंदर और वापस ऊपर जाकर के फिर घूम सकता है. So this phenomena is known as unidirectional block in the bundle branch, and this unidirectional block will cause a generation of the circus movement in the ventricles of the same impulse and will cause multiple rapid excitation resulting into the ventricular tachycardia, okay, or ventricular flutter, we can say. And if not attended for long time, this ventricular flutter can cause or can go into the condition of ventricular fibrillation, which is usually very fatal. That is about the rhythm disorders. In some persons, ये देखते हैं इससे ज्यादा ये, this is fibrillation, circus movement is there. Now we come to another condition. अब हम उस पे आते हैं हार्ट ब्लॉक के ऊपर. रिदम को छोड़ देते हैं यहाँ पे. हार्ट ब्लॉक के ऊपर शॉर्ट नोट आता है काफी कॉमनली. हार्ट ब्लॉक कैन बी डिवाइडेड और कंसिडर्ड अंडर वेरियस कैटेगरीज. 4 कैटेगरीज की हम बात करते हैं. हार्ट ब्लॉक कैन बी साइनो एट्रियल हार्ट ब्लॉक, पहला कंडीशन है. सेकंड इज एट्रियो वेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक. थर्ड इज bundle branch block, and fourth is arborization block. Sinoatrial heart block, atrioventricular heart block, bundle branch block, and arborization block. Sinoatrial heart block we have already seen, blocking at the SA node. The impulse is getting generated at the SA node, but it is blocked. So during the normal cardiac cycle, normal recording going on, one complete beat will be missed because as the impulse is not arising from the sinoatrial node, no atrial excitation will be there, no ventricular excitation will be there, so no P wave, no QRS waves are recorded. So sudden dropping of one beat during the recording of the ECG indicate the presence of the sinoatrial heart block. Okay. Then comes the major variety, that is known as the atrioventricular heart block. This atrioventricular heart block can be divided into 3 categories. 3 grades हैं, इसी category ना कहें. 3 grades of the atrioventricular blocks are there. First degree heart block, second degree heart block, and third degree heart block. The first degree heart block, you see, normal PR interval is 0.16 seconds. The only way to diagnose the first degree heart block from the electrocardiogram is increase in the PR interval beyond 0.2 seconds. So if any ECG recording shows the PR interval more than 0.2, it is the condition of the first degree heart block. This is first degree heart block. PR interval is increased, prolonged PR interval you can see. ज्यादा आ रहा है, बढ़ा हुआ आ रहा है. In the second degree heart block, which is of 2 varieties, second degree heart block 2 तरह का होता है. तो second degree heart block is of the 2 types. One is known as Mobis type 1 and Mobis type 2.
मोबिस टाइप 1 हार्ट ब्लॉक, ये हम पूछते हैं हम एग्जाम में, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक. See the ECG recording, although it is manually drawn, so it has certain defects. But one thing is very clear. PR interval is increased. इसमें कहाँ दिखा रखा है क्या? इसके पहले PR इंटरवल कम है, यहाँ PR इंटरवल बढ़ गया, और यहाँ PR इंटरवल इतना बढ़ गया कि एक बीट ड्रॉप हो गई. So from one beat to successive beats of the heart, the PR interval goes on increasing. 0.2 second, 0.25 second, 0.26 second, 0.3 second, and ultimately one QRS complex is not there. This type of the block where the PR interval gradually increases in successive beats is known as second degree heart block, is also known as Wenckebach's phenomena. W से शुरू होगा, Wenckebach's phenomena, और Mobius MOBITZ, Mobius type 1 block कहते हैं इसे, second degree heart block. The another type of the second degree heart block can be that there is a sudden drop of one ventricular beat, otherwise the PR interval remains normal. That is Mobius type second block. This third degree block is very important because this is life threatening. Any second degree heart block can culminate into third degree heart block. जो आपका Wenckebach's phenomena, gradually there is an increase in the PR interval and ultimately one beat is dropped. It may be that no other beat arises and the person goes into the complete heart block. So third degree heart block means the impulse arising from the sinoatrial node is blocked completely at the atrioventricular node and ventricles are not getting excited. This phenomena is also known as Stokes-Adams syndrome. STOKES, Stokes-Adams syndrome, third degree heart block. So when there is no conduction of impulse from atria or SA node to the ventricles, no beating of the, no depolarization of the ventricles are there, no contraction of the ventricle is there, there is no stroke volume output, there is no cardiac output, brain suffers from the ischemia. ये sequence of events है जो हमको लिखने पड़ेगी short note के अंदर. No supply of the blood to the brain, cerebral ischemia is there, person loses consciousness, and that is the Stokes-Adams syndrome. If a big if is there, if ऊपर वाले ने अगर जिंदगी लिखी है तो then the ventricle will start beating of their own rhythm. AV node is completely blocked, impulse cannot be conducted from the atria to the ventricles. But if the life is there, then the ventricle, because the ventricular ischemia is also there, supply blood brain को नहीं हो रही तो heart को भी नहीं हो रही खुद को भी, तो ventricles goes ischemic, and we know that the ischemia causes irritation of the muscle. The muscle gets irritated, and under that condition, any part of the ventricle which is otherwise capable of generating the rhythm can start generating its own rhythm. That rhythm is known as idioventricular rhythm. That is known as idioventricular rhythm. और अगर वो start हो गई तो मरीज को जिंदगी मिल जाती है. But there is a difference there. Now, this idioventricular rhythm arising from the ventricular itself. So a rate of pacing by the ventricle is much lower than the pacing by the sinoatrial node. So the rate of, or we can say RR interval in such a recording will be much more. The rate will be 35 to 40 beats per minute only. That is the ventricular beating rate normally. बहुत कम होती है ऐसे नोड के मुकाबले. So that is the idioventricular rhythm. Now further ECG में और बदलाव आएंगे. Now because there is no correlation between the ventricular depolarization and atrial depolarization, atria are getting depolarized by the impulse arising from the sinoatrial node. So rate of P wave generation will be dependent upon the SA node. Rate of ventricular QRS complex will be dependent upon the wave of depolarization generating from the ectopic focus in the ventricles. So both atria and ventricles are beating independently. PP interval will be different
then RR interval. One thing. Secondly, because P waves are occurring at their own rhythm, R waves are occurring at their own rhythm, it may happen many times that P wave gets superimposed over the QRS complex. आपको दिखेगा नहीं कि P wave कहाँ गई, कहाँ, उसमें मर्ज हो गई, उसके ऊपर आ गई वो. And another complication which can develop is that because the contractions are not synchronized, atria अलग contract कर रहा है, ventricle अलग contract कर रहा है, it may happen that the contraction of both chambers may superimpose over each other. जब atria contract कर रहा है तभी ventricle ने भी contract करना शुरू कर दिया. They can overlap each other, and under that condition atrial blood will not come into the ventricles at all. कि जब ventricle contract करेगा तो atrioventricular valve बंद हो जाएंगे तो atrial blood आ ही नहीं सकता उसके अंदर. So there is a complete discord between the ventricular activity and the atrial activity. These are the changes which occurs during the complete heart block in the ECG. Okay. So that was about the atrioventricular block. ये दूसरा वाला था. The third is the bundle branch block. Two bundle branches are there, right bundle branch and left bundle branch. ब्लॉक किसी में भी हो सकता है, कॉज बहुत सारे हैं, इन्फेक्शन भी है, इस्कीमिया भी है, मैकेनिकल डैमेज भी है, इन्फेक्शन वायरल बैक्टीरियल फलाना ढिमका इम्यूनोलॉजिकल, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो मेडिसिन का काम है पढ़ाने का. हम देखेंगे बंडल ब्रांच ब्लॉक में फीचर इसमें दे रखा है कि नहीं दे रखा. कोई नहीं, हम वैसे देख लेते हैं. If the left bundle branch is blocked, bundle branch left भी है, right भी है. If the left bundle branch is blocked, then impulse normally proceeds through the right bundle branch, excites the right ventricle first of all, and then the impulse goes to the left ventricle by muscle to muscle contraction, muscle to muscle passage of the impulse. So what happens is that initially all the vectors of ventricular depolarization are directed toward the right hand side. Okay, it means that and left ventricle will depolarize in the last. So all last vectors are unopposed, directed toward the left hand side. So in the recording of the ECG से chest leads की बात करें तो V1 के अंदर R wave बड़ी हो जाएगी, उधर की तरफ जा रहा है, और V6 के अंदर S wave deep हो जाएगी. That is bundle branch. But the main feature beside these is that because of the slow conduction of information or wave of depolarization into the left ventricle, QRS complex duration will increase. Wider QRS complex will be there. ठीक है? One major change in the left bundle branch is increase in the duration of the QRS complex. Secondly, the QRS wave may become bizarre, आड़ी टेढ़ी आ सकती है. And third important thing is that as the vectors in the last are directed toward the left hand side, so in the if you calculate the mean electrical axis of the heart, then there will be intense left axis deviation. लास्ट में सारी एक्सिस लेफ्ट की तरफ चली जा रही है, तो जब हम एक्सिस कैलकुलेट करेंगे तो आपके लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आएगा. सो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक causes increase in the QRS duration, bizarre QRS complex, and left axis deviation. In case of the right bundle branch block, just reverse will be there. So when the right bundle branch is there, block is there, again the QRS duration will be again increased, but to lesser extent, because the right ventricle has got less muscle mass in comparison to the left side. But again, there will be an intense right axis deviation. Mean electrical axis of the heart will be deviate toward the right hand side. ये major changes होंगे आपके bundle branch block के अंदर. And the last one is the arborization block और fascicular block जिसको कह सकते हैं. उसमें major changes will be in the shape of the QRS complex. तो वो सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट ही पता लगा सकता है कहाँ ब्लॉक है, वो फिजियोलॉजिस्ट का काम नहीं है. So that is about the heart block. ठीक है. The third condition or third type of the phenomena which are seen in the ECG are changes during the hypertrophy.
When the ventricular muscle mass increases, what will happen? If the atrial muscle mass increases, what will happen? So in case of atrial hypertrophy, the major change seen is an increase in the voltage of the P wave. P wave gets increase in the duration और P wave में भी bifurcated, दो P wave आ सकती है एक की बजाय. एक तरफ राइट एट्रियम नॉर्मल डिपोलराइज हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम डिलेड डिपोलराइज हो रहा है, तो दो वेव आ सकती हैं. टू वेव्स आर देयर. और इफ द राइट एट्रियम because of say problem in the pulmonary valve, if the pulmonary valve is cardiac cycle पढ़ ली ने, pulmonary valve अगर स्टेनोज्ड हो, स्टेनोसिस का मतलब, स्टेनोसिस का मतलब मरमर पड़ी कि नहीं हार्ट में, मरमर पड़ी, हार्ट की मरमर, सिस्टोलिक मरमर्स, डायस्टोलिक मरमर्स, कॉज ऑफ द मरमर्स क्या हो सकता है, क्या कारण होता है मरमर्स का? दो ही कारण होते हैं, या तो वाल्व बंद नहीं हो रहा, या पूरा खुल नहीं रहा, या तो स्टेनोसिस हो या इनएफिशिएंसी हो. दो ही कारण होते हैं. और इन स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन के बीच में सबसे बड़ा कारण है टर्बुलेंट फ्लो ऑफ द ब्लड. टर्बुलेंस कॉजेज वाइब्रेशंस, vibrations causes aberrant sounds, adventitious sounds that we call as the murmurs. So if pulmonary valve, sorry, not pulmonary valve, tricuspid valve which is present between the right atrium and the right ventricle, if it is stenosed, मतलब ये पूरा खुल नहीं रहा, तो राइट एट्रियम के ऊपर लगातार दबाव पड़ेगा, ज्यादा फोर्स से ब्लड डालना पड़ेगा उसको वेंट्रिकल्स के अंदर. इसका मतलब राइट एट्रियम को ज्यादा काम करना पड़ रहा, तो हाइपरट्रोफी हो जाएगा, धीरे धीरे उसके मसल मास बढ़ेगा. In that condition we can have two waves. दो पी वेव आ सकते हैं, राइट एट्रियम का लगा रही है, लेफ्ट एट्रियम का लगा रही है. जबकि अगर लेफ्ट एट्रियम ही हाइपरट्रोफिड है तो पी वेव की पीक बढ़ जाएगी, उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा. ये पी में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, हाइपरट्रोफी के अंदर. मगर वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दो पॉइंट्स में बताएंगे सिर्फ. राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी means muscle mass of the right ventricle is increased. In that case, the voltage generated of the QRS complex will increase. दो changes major होंगे, voltage of the QRS complex will increase, and secondly there will be again right axis deviation. क्यों राइट का मसल मास बढ़ रहा है तो वेक्टर राइट साइड में ज्यादा चला जाएगा, तो आपको राइट एक्सिस डेविएशन करेगा. इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है तो आपके वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाएगा, क्यों उधर मसल मास बहुत ज्यादा है लेफ्ट वेंट्रिकल का. सो ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द वोल्टेज ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अलोंग विद इंटेंस लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आर द फीचर्स इन द ईसीजी ऑफ द हाइपरट्रोफी पैटर्न इन द मायोकार्डियम. लास्टली मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड इस्कीमिया.